Hello dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we're talking about the next topic of homeostasis. That is about osmoregulation. So पहले lecture के हम osmoregulation बारे की discuss करूँ. Already हम previous खबर करी और homeostasis बारे की और दागी feedback mechanism हम discuss करें. नन हम वायु चीज़ दी homeostasis कम aspects दी मतलब जो सर कम time पे जो सर homeostasis perform की यार जो सर कम aspects दी दागी perform के दो. तो यार सर student जिकम जो सर homeostasis देखना दी basically बुनियादी तो हमारी 3 aspects. Eu vamos mostrar osmoregulation ni, bal vamos mostrar thermoregulation ni, ou bal vamos mostrar de excretion. या साथी के ना osmoregulation vamos mostrar अगर हम पर डिटेल मारी lecture की दागे introduction चीज़ दागे basics दी दागे हम वायु कम condition चीज़ अगर हम discuss करो. thermoregulation मतलब दागे कंजम वाले की maintain सादल से regulation कवल maintain कवल से temperature. Excretion से मतलब दे जिसमें हम unwanted substance हम उसमें बाड़े की हम सराची हर सुनने चीज़ दागे हम बाड़े की इसकी सब रूल नष्ट दे जहरीले दे नुकसान दे दी आगे सुनने हम दबाई ना रिमूव कवल इस तरह तमाम excretion है. Now हम निशान आप upcoming lecture के बेटे जिसको one by one यानी lecture की मंगा पर this particular lecture की मंगा खबर है तो osmoregulation दागे introduction से चीज़ औसम परफॉर्म की. Now वाली खबर के ज़्यादा होगा कि what is the mean by osmoregulation? It is the maintenance of so चीज़ हम सरा it is the maintenance of salt in water balance in living body. यो जानदार को की the water of the salt maintain सातल होता balance सातल तक तमन सवायु osmoregulation होता है सो तो लिखेगी osmoregulation तो यो वर्ड की खबर है balance of water in salt concentration. The water of the salt concentration maintains such a periodic body की तक तमवायु osmoregulation. अभी आज इस टॉपिक स्टूडेंट osmoregulation फर्दर हम सारा डिवाइड दी इक्वल टू और सिलेबस या हम एफएससी कम सेकंड ईयर बायोलॉजी दागी मुताबिक osmo कन्फर्म बने osmoregulator. और आगे नमक की खास खबर दी अगले इस दकरोली ज़्यादा लाजिमी है और आगे बेसिक्स दी जिदा हम तो पता ही हो दाम संग इस दकरों ना स्टूडेंट याद सही करना osmoregulation the para osmosis दी ज़्यादा लाजिमी है जिदा तो पता है what is the mean by osmosis? Osmosis. What is the mean by osmosis student? यहाँ से कैसे descriptive definition होता है मतलब जो सरा आसान विमा नुबे बदस यार जिसमें मतलब diffusion of water molecule across the semi-permeable membrane. क्या from high concentration to low concentration across the semi-permeable membrane is known as osmosis. चिकन जो सरा diffusion of water molecule शी across the semi-permeable membrane of the high concentration and low concentration such kinds of movement of molecule of water is known as osmosis. that हम osmosis बोल. हो जो detailed definition चीज़ किंतु सी बड़ी की the movement of water molecule. The movement of water molecule from high concentration to lower concentration across semi-permeable membrane is called osmosis. चिकन सर high concentration of water na low concentration of water the movement की across the semi-permeable membrane such kinds of movement of molecule या movement या diffusion of water molecule is known as osmosis. तक तम सो osmosis तो लिखी वसो osmosis युबल आसान डिफिकल्ट तासो की जस्ट नजर से में चिकन समसरा युद्ध से सॉल्यूशन चिपाई की solute concentration कन the movement of Dilute solute concentration towards the high solute concentration solution is known as osmosis among white. Shikala the low concentration of solute na high solute concentration of solution the movement of water के दो such kinds of movement is known as osmosis. तक तम osmosis हुआ. उसको स्टोर करना कि ज़्यादा तो solution उनको लिखना solution उस तब solution combination दे रहा बहुत चीज़ों यो तुम सा solvent और बल्ले समझा solute. Large amount चिकन या कदम हमेशा बासी salinity और चिकन small quantity या small amount या कदम हमेशा बासी solute. For example कदम हमेशा सरसरी यो salt कंसिडर कर लेगा solution दे. तो for example कदम दा salt और plus 5 के साथ water दे बगी. उदा water दागी solvent दे और दा salt से solute दे. तो आपकी 5% दे. उदा remaining जिसमें बाकी 95% बाकी किसी में सारा water बगी समझ. तो सोड दा को solution formula. उस osmosis से देखिए लोगों आसान के जरिए हम YouTube वाले तो दसे वाला
अब देखिए the water pill kama hopefully central के सोलो kama you semi permeable या selective permeable membrane देखिए वो लोग selective permeable membrane और देखिए तो तमा एक pure water दी H2 दी pure dilute water से कम हुआ और देखिए तो तमा एक you solution मत ऐड को अगर solution चिकन हो अगर 95% पाई के सो water दी और सिर्फ 5% पाई के सो salt this is the water concentration सेवाले this is the water concentration कम थी और दाची कम membrane लेके इधर इधर हम सारा selective पर दान solution देता था ना इलाओ के मोमेंट होती और दा water बती तो नसी की already with high concentration ना low concentration और this is the मोमेंट थे उनको panics कर लेगा दास को स्टूडेंट दा water हम सारा दसी YouTube दास और दान selective पर में दाची कम solution दे दी concentration को इलाज दी water दे तो हम सारा high और दान हम से बरश और दा बला दे जगह the water chicken this is the moment go from high concentration to low concentration moment go such kinds of moment is known as osmosis that the osmosis one also on the base of this osmolarity the most हमेशा para animal शो या living thing शो या your cell शो हमेशा para दा three condition की दोनों से मौजूद है या दा hypotonic condition की या दा hypertonic condition की या दा isotonic condition की उस दाते से शायद और दासत तो लेकिन एक्सप्लेन को पढ़िए डायग्राम की और ये खबर से आपको मा ची दाम से यो सेल सेल Dam cell or dam cell. Now three cell or three different condition की present. You पर hypotonic condition की लेवल पर hypertonic condition की लेवल पर isotonic condition की. उस hypertonic condition से वही hypotonic condition से वही isotonic condition से वही. उस थोड़ी खबर याद सकती हमेशा रखा. पहले पता है कम condition चिकन ने क्या ना पड़ी कि water चिकन जो गुरु माँ नो पड़ी कि water present दी almost तो तकरीबन 95%. सब के present दी 95% वाटर दी बेटी उनका साथ जो गुरु मबरी की परसेंट नी तकरीबन 5% साल की परसेंट बड़ी कंडीशन की बात उनका सेल जो गुरु मतलब सेल के तो सारा वाटर चिकन दी दा 90% दी और साल चिकन दी साल अगर पर किसी 10% प्रेजेंट नुकोरा हाइपोटोनिक अमंग दिस कंडीशन दवाई गोरे ची द साल कंसंट्रेशन इज लेस देन रिस्पेक्टिव या दियर सेल चिकन सेल बड़ी के प्रेजेंट नहीं या कम एनिमल प्रेजेंट या कम जानदार दे ची द अगर साल कंसंट्रेशन ना पर द बाहर एनवायरनमेंट की दाच में कंडीशन के द अगर साल कंसंट्रेशन कम हो such kinds of condition is known as hypotonic condition दा कितम सवाई हाइपोटोनिक कंडीशन होते हैं की तो ये की ची देन lower concentration या low salt concentration this type of condition the condition in which low salt concentration then cell the cell ना चिपाई की साल कंसंट्रेशन कम यानी तमन सवाई हाइपोटोनिक कंडीशन होते मिलेगी उसको याद साल स्टोर दत्ता चिकन वाटर कंसंट्रेशन दा सिवारे दन वाटर कंसंट्रेशन कम दी बार साल कंसंट्रेशन कम दी और दन साल कंसंट्रेशन सिवारी नो डिफरेंट दा खबर दा वाटर मूवमेंट की फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड नो तमन सवाई इट्स allow end osmosis endosmosis ना हां end osmosis inside movement of the water from the environment to the cell. The environment condition चिकन ने medium चिकन ने पर ये salt concentration कम दी cell के जैसे salt concentration से वाली the bar condition की water से वाली then the cell condition की water से जैसे कम दी no water movement की from high concentration to low concentration या मतलब diminution के लिए तो from lower solute concentration to higher solute concentration no the solute concentration 5 तो solute concentration से 10 दी no the low concentration ना high concentration हम से movement की या from the high concentration to low concentration of the water movement among osmosis वाली but the condition से की end osmosis पर मान की और this condition is known as hypotonic condition होता है वेट चिकन कंडीशन एक hypertonic condition सिवा के इधर नुकोरा पहले की बात environment चिकन की पहले की बात तकरीबन से 90% ना कभी पर की वाटर में पड़ी वाटर में किसमें पड़ी 90% भाई और 60 में किसमें पड़ी 10% वो कसर में तो पूरी फसल की वाटर चिकन की दावत से 95% ही और 60 में किसमें पड़ी सिर्फ और सिर्फ 5% पड़ी नुकोरा this is condition in which the concentration of salt is more than cell tissue. Such kinds of condition environment is known as hypertonic condition. The condition in which more concentration of salt than cell या
टिश्यू या कम ऑर्गेनिज्म अंदर बेचनो नहीं तमम वायु हाइपरटोनिक कंडीशन नम तब सोरी की हाइपरटोनिक कंडीशन और पता सिकल की बची की गोरा न तो साल कंसंट्रेशन सिवा तो साल कंसंट्रेशन कम दी खुद तो वाटर कंसंट्रेशन सिवा तो वाटर कंसंट्रेशन कम दी नो वाटर बेचनो की फ्रॉम द इनसाइड ना आउटसाइड द मोमेंट बकवलिश नो यो कसम हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मोमेंट बल माला खबर मख की होतले बड़ी परेशानी की कि दे टाइप ऑफ मोमेंट सल्यूट कंसंट्रेशन बचा की कम हो ताकि द मोमेंट की हाई सल्यूट कंसंट्रेशन तो गोरा नलता सल्यूट कंसंट्रेशन कम दी नलता सल्यूट कंसंट्रेशन हाई तो बदी वाले वाटर मोमेंट की द लो सल्यूट कंसंट्रेशन ना हाई सल्यूट कंसंट्रेशन this is why hypertonic condition और बदी कंडीशन की बची की it allow X osmosis X वाला आउटसाइड एग्जिट होना वतन वाटर बदी ने की बाहर तरफ हो तो देख कर इसमें बायो X osmosis होते लगी X osmosis होते लगी नेक्स्ट सेकंड कंडीशन की आगे मुसलसल आइसोटोनिक कंडीशन आइसोटोनिक मतलब तारीख से ये चीज सेम आइसोनी सेम तारीख माने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो गुरा 90% तकरीबन जो ये मच सेल की 90% जो सब एनवायरनमेंट की सरी वाटर दी और 10% पर की सरी तो वाटर आउटसाइड दी और कसम ये सेल उड़ेगा मतलब सेल के बाकी 90% द वेरी वाटर दी और 10% पाई की सरी साइड दी तो गुरा इतनी बार नो नीड ऑफ osmoregulation या नो नीड ऑफ osmosis It's this osmosis of breaking a proper जगह जिस हम सारे concentration दी outside or inside the bond concentration same दे बराबर दी no such kinds of condition या environment या medium is known as isotonic medium isotonic condition या isotonic environment उस स्टोरी जो खबर याद साथी आज लिमा बखी ला खबर होंगे जिस हम सारे बात पति condition के हम सारे हम मालूम है osmoregulation पति में बेस मानी उसको ताकि वाली condition इस दर्द ci dunia के सुमरम जानदार दी एनिमल दी लिविंग दी पर दी थ्री वालों को यूं एनवायरनमेंट की बात प्रेजेंट या हाइपोटोनिक कंडीशन की या हाइपरटोनिक कंडीशन की या आइसोटोनिक कंडीशन की प्रेजेंट द दी कंडीशन में बेस मानी द osmoregulation दो किस्म यो तमाम वायु osmoregulators और तमाम वायु osmoconformers वो सब तो को लेकर नो kada dazu goroma kada condition ko zama end osmosis goroma aw ka x osmosis goroma end osmosis goroma ko continuously maintain مسلسل وبسل تدل زي زي ده سلبة سيجي برسكيجي بتشيبا ودينا خبرنا ما كانش ده مينتين وصل ده خبرات ده واتر يو خاص بالانس السالت اوف ذا واتر وصل يو خبر زال مينتين كي بدي كبير كانش تزوج ما هايبرتونيك ده سيواني continuously دي بعدين واتر روان دي موفمنت كي بحر تجي لو ده ما كانش ده خبر سال الواتر سيجي ده مينتين وصل كنين مسلسل جدنا ده واتر وزي نو ده سلبة سيجي شريك بشي او كده ده سيشن ده بدت كي مريبا هو ايزوتونيك कंडीशन की तो को लेकर ना उदा खुशहाल दी मजीद तो इस किस्म osmoregulation नहीं पता नो तो जरूरत था बता आइसोटोनिक की ना तो वाटर और साल्ट की का बैलेंस थी इस किस्म osmoregulation डालना के नो बदी कंडीशन की तो को लेकर कजोरी का मजीद वाला कि कल तो मसला जानता है एनिमल प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म चिकन पर ये दो कंडीशन क्यों या आप हाइपोटोनिक कंडीशन क्यों या आप हाइपरटोनिक कंडीशन क्यों तो दिस सच काइंड्स ऑफ एनिमल इज नोन एज या सच काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज osmoregulator तरी तम समझो osmoregulator होते हैं ठीक है they need osmoregulation for their existence for their life या for their existence in earth दिल पकाज द osmoregulation की तो दा सच काइंड ऑफ एनिमल तम समझो osmoregulator होते हैं और तो से जानना चाहिए कि osmoregulation इस किस्म जरूरत नहीं चाहिए तमाम वायु osmoconformers तो देखिए osmoconformers तो देखिए कि मतलब पनीर जो बारे की तो पूरी द्वे में खबर याद साथी osmoconformers बारे की और osmoregulator बारे की चिकन तो मसला the body internal environment हमेशा पर salt concentration the body external environment बराबर हो such kinds of animal is known as osmoconformer the body salt concentration is equal to the external environment salt concentration so such kinds of animals are being osmoconformer तक तो osmoconformer हुआ और चिकन समझ सकते हो internal body salt concentration is not equal to the external environment salt concentration तो तक दबे में वायु
اسموریګولیټر دا ته موږ څه ویل کی اسموریګولیټر اسموریګولیټر مطلب څه چې دیو ته پکار دی اسموسیس وکړي خپل ځان مینټین کی خپل سالت ان واټر چې کوم دا بیلنس کی مینټین وساتي او دا هیڅ قسم دا مینټین کی بیلنس دی هیڅ قسم د اسموریګولیټر ضرورت ته نشته دا موږ وایو اسمو کنفرمرز او چې اسموریګولیټر ضرورت ته موږ وایو اسمو regulators او دا څه زموږ سره introduction یا introductory part about osmoregulation. Next کوم ټاپک موږ کوم چې اپکمینګ لیکچر کې هغه به چې ډیفرنٹ انوایرنمنت کې زموږ سره ډیفرنٹ انیمل څه قسم osmoregulation کې لکه مثلا زموږ سره په میرین انوایرنمنت کې زموږ سره جاندار څنګه osmoregulation کوي په فرش واټر کې پداسه څنګه کوي او په لینډ انیمل چې هغه په طریقه باندې osmoregulation پر پابلی دا به چې موږ په لیکچر کې وایو نن لیکچر باندې زموږ سره داونه باسو دا زموږ سره د osmoregulation چې introductory part هغه دا بیا به تاسو قسم ډاوټس یا تاسو کوېسچن تاسو په کمنټ سیکشن کې ولې شي. This is all about today. See you in next lecture. Allah Hafiz.